ना हो A का जो B में ना हो. Here, if A is a subset of B, we called and we represented by A. This is the sign of subset. It is the denotation of subset, right? Means contained also. We can write it as contained. A is contained in B, right? Means पूरा set A किस में जा रहा है? B में. We called it A is a subset of B or A is contained in B, right? If and only if, when we say it, कब कहते हैं? When all the element of A belongs to A implies A belongs to B. जब A के सारे एलिमेंट किस में जाएं? B में जाएं. The symbol implies. This is stands for implies, right? If A is a subset of B, we say B ऐसा सेट है जिसमें कंटेन है. क्या कंटेन है? A कंटेन है. तो A को तो सबसेट बोलते हैं. A is the subset here. But what about B? B को क्या बोलते हैं? We called it superset. Right? A is a subset and B is called superset. If A is not a subset of B, then we take this contain and then cross it. Means not contain. A is not contained in B. Means any element is there which is in A but not in B. Right? Clear? Now, every set is a subset of itself. Very, very important. Every set is a subset of itself. Consider A. A equal to, I am saying 1, 2, 3. Right? Now, are these all elements are in A? Yes, absolutely yes. Means every set is a subset of itself. And we know empty set. It is also, ये तो हमेशा ही क्या होगा? कंटेन होगा. किसमें कंटेन होगा? A के अंदर होगा. Why I am taking equal also? So if A equal to 5, A हमने कंसिडर किया 5, तो 5 that is contained in A or not? Yes. Clear? This is not an element. You have to understand it properly. आपको अच्छे से इसको समझना पड़ेगा कि ये जो होता है वो क्या होता है? सबसेट. सेट होता है. क्या होता है? सेट. It is not a element. If we say it is an element, then it belongs. Element belong करता है और set हमेशा contain करता है. A set, a subset A of a set B is called proper subset. Now we are defining proper subset. When we say A contain in B, we have two symbols here. That all the element of A is in B and A is equal to B, right? Okay, maybe contain or equal. Both can be possible, right? But if A is not equal to B, means equal तो नहीं है. We say A is now proper subset. क्या बोलते हैं उसको? Proper subset. We write it as A contain in B. In such a case, we also say that B is a superset of A. तब भी यहाँ पर क्या कहेंगे? B superset होगा, right? So let's understand it by some examples, right? With the examples, we can easily understand all the concept. For example, if I take A, that is A, E, I, O, U, right? B is a set we have here. A, B, C, D up to Z. Now, what I am saying, these 5 elements that is in this B or not. ये जितने भी 5 एलिमेंट है वो सारे आपको इसमें मिल जाएंगे. पूरे के पूरे अल्फाबेट्स में मिलेंगे. Yes, means all the element of A is in B, right? It means it is contained in B, right? It is a subset of B. We called it subset. A subset कहलाएगा and B is called the superset of A, right? Now B. Now here
A is a proper subset of B, then there exists an element X belongs to B and X does not belongs to A. देखो अभी मैंने कहा A equal to, कंसिडर करते हैं यहां पर A, then B, C, D and let F, right? Now here we have another set B that have A, B, C, E, F, right? So A is in it, this also, this element also, F is also. But what about D? D, it is an element which is in A but not in B, right? It does not belongs to B. So implies we say A is a it's a subset only. We can say it is a proper subset, right? क्या बोलेंगे इसको? Proper subset. Clear? Okay. Now, if you say here, कोई भी आप एलिमेंट ले लो, यहाँ पर प्रॉपर सबसेट भी नहीं होगा, बल्कि क्यों नहीं होगा? क्योंकि डी बिलोंग ही नहीं करता, है ना? हमने कहा था सबसे पहले तो कंटेन तो हो, तो ए तो यहाँ पर कंटेन भी नहीं हो रहा, राइट? इट डज नॉट कंटेन टू दिस. बट व्हाट अबाउट प्रॉपर सबसेट? प्रॉपर सबसेट में हम क्या कहेंगे? ए, बी, सी, डी, एफ एंड अनदर वन we are taking B as A, B, C, D, F and then I am taking here G also. Now there is an element that is here in B. अब मान लिया G जो element है वो B में है, right? But किस में नहीं है? A में नहीं है. It does not belongs to A. तो अगर ये सारा सेम हो जाता तो हम उसको बोलते सबसेट है, सबसेट है. बट अगर वो इक्वल नहीं है, राइट? क्योंकि जी इसमें नहीं है, इसमें है, तो इट मीन्स हम यहां पर ए को प्रॉपर सबसेट बोलेंगे, राइट? इट फॉलोज इमीडिएटली फ्रॉम दिस डेफिनेशन एंड द डेफिनेशन ऑफ इक्वल सेट दैट टू सेट ए एंड बी आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ ए कंटेन इन बी एंड बी कंटेन इन ए. इट्स वेरी सिंपल थिंग. ए, इट इज हियर 1 2 3 4 5, right? B, that is here 1 2 3 4 5. This A, all the elements are in B. B, that is all element in A. Can I say now A is equal to B? Yes, absolutely right. Clear? Okay. Thus, whenever it is proved that two subsets are equal, we can say that A contain in B or and B contain in A, right? Clear? Now, next is subset of a set. We have here 1. So 1, if I am writing, it is a element. It is an element, right? Element. And this element belongs to set. But if I write 1 and then curly bracket, so it is not an element now. It is a set now. And set always contain. Right? So can I see this? Can you see this? Here 1, 1 that is contained in A. Here it is. But 1 4. If I am writing 1 4, तो 4 is not the element of it. इसका तो element है ही नहीं. तो इसका मतलब ये इसका part नहीं है. तो it means it is not the subset of it. Clear? Now here n we call natural number. Natural number. सारे नेचुरल नंबर किस में होते हैं? इंटीजर्स में होते हैं, राइट? इंटीजर्स जो होते हैं वो किस में होते हैं? रैशनल नंबर्स में होते हैं. रैशनल नंबर क्यों? क्योंकि जैसे अगर मान लो इंटीजर हमने -1 माना तो -1/1 रैशनल नंबर हो गया, बिल्कुल हो गया, ठीक है? और सारे रैशनल नंबर क्या बन जाते हैं? हमारे रियल नंबर बन जाते हैं. क्लियर? ओके. Now, if A is a set of all divisor of 68 and B is a set of all prime divisor of 68, then B is a subset of B. A, we say all divisor of 68. B is all prime. यहाँ हमें सारे के सारे डिवाइजर लेने हैं 68 के और यहाँ हमें प्राइम. तो इट मीन्स यहाँ पर आप कह रहे हो कि ये इसके इक्वल नहीं होगा, ठीक है? तो B is a subset of A. इक्वल नहीं है, कैसा है? सबसेट है. सो यू कैन से प्रॉपर सबसेट आल्सो, राइट? नाउ लेट्स सी दिस थ्योरम. एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ.
We know every set is a subset of itself. A, that we have here -1, 0, 1, and B we have this -1, 0, 1. ओके, ऑब्वियस है, जितने भी एलिमेंट है वो सारे इसमें जा रहे हैं, ठीक है, आप इसको ए ही मान सकते हैं, वी कैन कंसिडर ए ऑल्सो। तो ये जितना भी है यहाँ पर एलिमेंट ऑफ ए इज इन एलिमेंट ऑफ ए, मीन्स जो सबसेट की डेफिनेशन है वो यहाँ क्लियर होती है, सेटिस्फाई होती है, तो इट मीन्स ये क्या कहा जाएगा, सबसेट होगा। एम्प्टी सेट फाई तो सब में होता है, ठीक है। नाउ very important, you need to understand it. The total number of subset of a finite set containing an element. देखो इसको ऐसे समझते हैं, A, right? Consider करते कुछ भी नहीं है, तो we have 0 element. Now, how many subsets are possible? Now, let's take B 1, 2. Now, 5 we are saying it is always there. Then we are saying 1 also. 1 बनेगा यहाँ पर सबसेट इसका, 2 भी इसमें कंटेन है, 2 is in this, and here 1, 2 also. Let's take one more, 1, 2, 3. So first that is 5, और हमने कहा लास्ट जो हमारा सेट होता है वो पूरा क्यों। Now we have 1, then 2, then 3, we have 1, 2, 1, 3, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Can you see this? 8, here 4, and here we have 2. 2 to the power 0, that is 1. Clear? And if you have here like a equal to, I consider 1, so that is 5. इसका सबसेट होगा और 1 भी होगा। तो इसमें कितने हैं? 1. 2 to the power 0. इसमें कितने हैं? 2 to the power 1, मतलब 2. 2 to the power 2, 2 to the power 3. It means we write here it is 2 to the power n. कितने सबसेट होते हैं? 2 to the power n. Like if I have a question, the number of element in set A equal to 11. So how many subset are there? How many subsets will be there? That is 2 to the power 11, right? Number of subsets, 2 to the power 11, right? Now let's understand one question here. Two finite set have M and n element. We have a set A, another set B. Number of element of A, that is M. Number of element of B, that is equal to n. Very important question. Total number of subset of first element. Total number of subset. तो अभी आप बताओ सबसेट ऑफ A कैसे पता चलेगा? फॉर्मूला है मेरे पास 2 to the power m. यहां पर भी फॉर्मूला है, इट इज 2 to the power n, राइट? नाउ टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट मतलब 2 to the power m is 56 more than 2 to the power n. Getting clear? Now take this here, 2 to the power m minus 2 to the power n equal to 56. Take common 2 to the power n here. We got 2m minus n minus 1, it equals to 56. Now make factors of 56. Here we have 2, 2 is a 4, 1, 8, 2, then here 14, then 2, and here we have 7, 2 is a 4, 4 is a 8, then can I write here 7 into 8? Yes, 2 to the power n into 2 to the power m minus n minus 1. So here 2 to the power n into 2 to the power m minus n minus 1. See n. So if you compare it, है ना, you can compare also or you can write also. आपकी मर्जी है आप कैसे इसको डिफाइन करते हो. This is 2 to the power 3, getting, and here it is 2 to the power this 7 as it is I am taking, right? This 7 as it is. So n value is equal to 3 and 2 to the power m minus n minus 1 equal to 7. So take this that side, m minus n equal to 7 plus 1, 8. 2 to the power m minus n is equal to 2 to the power 3. Base is same, power equal, m minus n की वैल्यू 3 आ गई. m minus n की वैल्यू 3 है, 3 plus 3 कितना हो जाएगा? 6.
m equal to 6, right? So this is how we can solve this question, right? Now let's take this subset of R of real number. See, set of all natural number, जितने भी नेचुरल नंबर होंगे वो कहां जाएंगे? They are contained in a real number, right? They are contained in a real number, integers also. Set of all rational number. Rational number we know that they are of the form p by q, where q is not equal to 0, right? तो यहां पर जितने भी नंबर होंगे वो सारे के सारे किस में जाएंगे? रियल नंबर. Implies rational numbers are the subset of real number. It is a subset of real number. Set of all irrational number, that is denoted by t. So here n contained in z, z contained in rational number contained in real number, irrational number is also in real number. So implies t is contained in this. Now here understand it. N natural number. So natural number are not in, they are not in irrational number, right? Okay, implies these are not the subset of it. Clear? Now next is subset of a set. Here we are talking about interval. Very important, interval. So let's understand what are intervals. How many types of type of intervals are there? We have closed interval, we have open interval also. So if I am saying a and b be the two given real number, a is less than b, let's 2 and 3 I am taking, then the set of all real number x such that this a less than equal to x less than equal to b, we called it is a closed interval. See, x की वैल्यू a भी हो सकती है, x की वैल्यू b भी हो सकती है, और इसके बीच में जितनी भी वैल्यूज होंगी वो इसके अंदर होंगी, right? So we are taking here this dot, solid dot, right? And you are involving a and b. आपने इसके अंदर की सारी वैल्यूज ली और a और b को भी इन्वॉल्व किया, तो क्लोज ब्रैकेट विल रिप्रेजेंट क्लोज इंटरवल, right? Okay, now let's consider this -1 to 2. x belongs to R. तो x की वैल्यू कहां से है? -1 से शुरू होती है 2 तक जाती है, ठीक है? x की वैल्यू -1 भी होगी और 2 भी होगी, और इनके बीच में जो वैल्यूज होंगी वो भी इसके अंदर एग्जिस्ट करेंगी. Implies -1 and 2 इंक्लूडिंग द एंड पॉइंट. उन्होंने एंड पॉइंट को अपने अंदर लिया, राइट? क्लियर? और यहां पर ये क्लोज इंटरवल बनाएगा. क्लोज यहां पर ये वैल्यूज जो होंगी वो इसके अंदर आ जाएंगी, और ये कैसा सेट होगा? इनफाइनाइट. अब आप कहोगे मैम -1 से 2 तक तो फाइनाइट है. बेटा, हाउ मेनी नंबर्स आर पॉसिबल हियर इन अ रैशनल नंबर्स? इररेशनल, इनफाइनाइट. कैसे होते हैं? इनफाइनाइट. बहुत सारे नंबर्स आप इसमें लिख सकते हो. 0.0 we are taking here 0, so 0.1 001 0000001. You can write infinite numbers between -1 to 2. Now let's take the another one, open interval. If a and b are the two real numbers such that a is less than b, then the set of all number x satisfying a less than x less than b. I am not taking a less than equal नहीं है, सिर्फ वैल्यू x की a और b के बीच में आएगी. ये यहाँ वैल्यू है, यहाँ पर वैल्यू नहीं है, तो that's why we are taking here open one. Encircling this a and b means a and b are not included into it, right? And how to denote it? It's denoted by a comma b. कैसे नोट करते हैं? a comma b. इसका मतलब क्या है? a less than x less than b. x की वैल्यूज होंगी a और b के बीच में होंगी, a और b कभी भी नहीं होंगी, right? Let's take this one, 1 comma 2. So here 1 less than x less than 2 is the set of all real number lying between this. So this is simple form, interval form, and this is here we have set builder form. X belongs to R such that R means, देखो यहाँ पर अगर हम कहें x belongs to natural number, 1 और 2 के बीच में कोई नंबर आएगा? नहीं आएगा, ठीक है? R से ही हम यहाँ पर सेटिस्फाई करवाएंगे, और R में 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट क्या होंगे? यहाँ पर नंबर होंगे, और इनफाइनाइट सबसेट भी होंगे, राइट? 1.1
belongs to this, right? ये सारे के सारे इसको यहाँ पर satisfy करेंगे. Now we have a semi open and semi closed. It's very simple that if a and b are two real numbers such that a less than b, then see here a तो यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं है और b को आपको इंक्लूड करना है. तो a लेस देन x होगा बट x इज लेस देन इक्वल टू b होगा, है ना. ठीक है, x की वैल्यू a नहीं होगी, x की वैल्यू b हो सकती है और उससे लेस हो सकती है. नेक्स्ट इज हियर a क्लोज एंड b ओपन इंप्लाइज x की वैल्यू a होगी, a से बड़ी होगी और b से कम होगी, b के इक्वल नहीं है. तो दिस वी कॉल्ड सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज इंटरवल, राइट. क्लियर. नाउ हियर ऑन रियल लाइन these may be graphed as कैसे, a is not included into it, so a open and b close. ठीक है, a को आपने क्या किया, इन सर्कल, ओपन मतलब आपको सॉलिड डॉट नहीं बनाना है यहाँ पर. ठीक है. नाउ दिस इज फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी मीन्स ऑन r. नाउ ba, सी दिस इज द लेंथ ऑफ एनी इंटरवल. किसी भी इंटरवल की जो लेंथ होती है वो हमें ऐसे ही पता चलती है, b में से a माइनस कर दो, b माइनस a, b माइनस a, b माइनस a. This will give you the length of any of the interval, right? Now let's understand here, very very important, the interval 0 to infinity. देखो 0 से स्टार्ट करा और कहां तक है, इंफिनिटी. So the number which are between here, these was 0 to 1, all numbers. So how to write 0, 1, 2? No. So this can be used, this can be represented by taking the intervals 0, infinity. What it means कि जितनी भी वैल्यू 0 से infinity के बीच में, whether they are rational, whether they are irrational, that all are including between 0 to infinity. And if I want to take 0 also, 0 close and then infinity, right? मतलब 0 को भी इन्वॉल्व कर दिया. पहले हम कह रहे थे 0 से infinity, अब हम कह रहे हैं 0 को भी इन्वॉल्व कर दो, right? इसको बोलते हैं क्या, r पॉजिटिव. इसको बोलेंगे क्या, r पॉजिटिव. नाउ माइनस इंफिनिटी टू 0, माइनस इंफिनिटी से कहां तक, 0 तक. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव. ऑल द नेगेटिव रियल नंबर्स. एंड इफ आई हैव माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, all the numbers which we can represented on number line, they all are what, they all are real numbers. We call them real numbers, right? Clear. So this is how we can represent them. Next is universal set. A set that contain all set. एक ऐसा सेट जिसमें सब सेट आ जाए, सारे सेट जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं. When we study two-dimensional coordinate geometry, then the set of all point in x, y, जितने भी पॉइंट पॉसिबल हो सकते हैं वो सारी यूनिवर्सल सेट बन जाएंगे. When we are using sets containing natural number, then n is the universal set. आपने कहा वो क्या बनेगा, यूनिवर्सल सेट बनेगा, right? Let's take here a equal to 1 2 3, r equal to 2 4 5 6, c is equal to this, u is equal to this, can be taken as universal. तो ये देखो u universal. 1 2 3 that is also in it. 2 4 6 2 5 6 that is also into it. 1 3 5 7 that is also into it. We put here curly bracket, just please correct it, right? So this is all the set, all these sets are in this u implies u called universal set, right? When we are using intervals on real line, the set r of real number is taken as a universal set. Okay, now very very important, that is power set. With this it's you can say that it's surely will come in your exam, 1 or 2 question that will be from power set. So if we have a set A, the collection or family of all subset of A, collection or family of all subset of A, that we call power set, right? जितने भी possible subset हो सकते हैं, like 1 2 3 we have 1 5 first, empty 1 then 2 then 3, 1 2 1 3 2 3 and 1 2 3. यही तो पॉसिबल हो सकते हैं. कैसे पता चलेगा, इतने ही पॉसिबल हो सकते हैं. 3 नंबर 2 to the power 3 that is equal to 8 implies how many, 8 subsets are there, right? And how to write it,
we put all these subset and then we put curly bracket. Means this is a set. Clear? So here P of A is a first S, not element. It's a set. And this all set contained in A. Empty set and the set itself also be the part of it. Clear? Power set of any given set is always non-empty. कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऐसा हो ये empty हो जाए. It is always non-empty. Now A is a void set. A हमने कहा void set है. Then P of A एक एलिमेंट है ना, तो it has only one element. Then we say P of phi equal to phi. क्या माना जाएगा? Phi. If we have here P of phi, then it has how many? 4. Clear? We know that a set having element, an element has 2 to the power n subset.